प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग क्लासरूम टेस्ट। क्लासरूम टेस्ट को किस तरह प्लान करना है और उसको एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह करना है। विद द अप्रोच फॉर इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशनल सिस्टम, तालीमी निज़ाम में एहतसाब को बढ़ाने के लिए इट इज़ वाइटल, ये ज़रूरी है डेट educators are able to apply a wide range of psychometric skills appropriate to the assessment of students with different pace of learning and background. It is equally critical that educators have a comprehensive understanding of current measurement and evaluate trends such as competency testing, performance assessment, curriculum-based assessment, and standardized assessment. There are 6 major steps in planning and conduction and assessment. First step is defining instructional objectives. Number 2, outlining course contents. Number 3, developing a test specification. Number 4, construction of test items. Number 5, administration of assessment and interpreting test scores. There are two types of assessment. Assessments के दो एग्जाम हैं, assessment of learning and assessment for learning. Assessment of learning is used to assess student learning achievement at terminal stages. असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है इसमें स्टूडेंट की जो असेसमेंट की जाती है वो टर्मिनल स्टेज पे की जाती है, आखिरी दर्जे पे की जाती है। वेयर एज असेसमेंट फॉर लर्निंग इनहेंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाती है। टेस्ट एंड असेसमेंट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। टेस्ट और असेसमेंट जो है ये ज़रूरी हिस्सा है ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। When properly done, they can not only effectively evaluate but also enhance students' learning and teachers' instruction. When poorly done, they can confuse and alienate students, distort the curriculum, and hinder good instruction. Test scores and grades sometimes affect highstakes decision about students, promoting intense concern that they be accurate and fair. Planning a test. The main objective of classroom assessment is to obtain valid, reliable and useful data regarding students' learning achievement. जो बुनियादी मकसद है क्लासरूम असेसमेंट का वो है वैलिड, रिलायबल और यूजफुल डेटा हासिल करना स्टूडेंट्स की लर्निंग के हवाले से, लर्निंग की सीखने की कारकर्दगी के हवाले के स्टूडेंट ने कितना सीखा है। दिस रिक्वायर डिटरमिंग व्हाट इज़ टू बी मेजर्ड, जिसके लिए ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इज़ टू बी मेजर्ड कि हमने क्या चीज़ किस चीज़ की पैमाइश करनी है, एंड देन डिफाइनिंग इट प्रिसाइजली सो दैट असेसमेंट्स टास्क टू मेजर desired performance can be developed. Classroom tests and assessments can be used for following instructional objectives. Classroom tests और assessments जो हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है नीचे दिए गए instructional objectives के लिहाज से। Pre-testing. Test and assessment can be given at the beginning of an instructional unit or course to determine whether the students have the prerequisite skills needed for the instruction, readiness, motivation. To what extent the student have already achieved the objectives of planned instruction, to determine placement or modification of instruction. Number 2, during the instruction testing, provide base for formative assessment
monitor learning progress, detect learning errors, provide feedback for students and teachers. Number 3, end of instruction testing. Measure intended learning outcomes used for formative assessment, provide basis for grades promotion. Prior to developing an effective test, एक मुतासिर कौन एक अच्छा टेस्ट बनाने से पहले one needs to determine whether or not a test is the appropriate type of assessment. इस चीज़ को मालूम करने की ज़रूरत होती है कि असेसमेंट की जो टाइप है वो मुनासिब है कि नहीं है, कि कौन सी हमने असेसमेंट की टाइप सेलेक्ट करनी है. इफ़ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर ऑफ प्राइमरली टाइप्स ऑफ procedural knowledge how to perform a task, then a written test may not be the best approach. अगर जो प्राइमरी टाइप्स ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज है कि हमने टास्क जो है को किस तरह करना है, तो उसके लिए रिटन टेस्ट अच्छी अप्रोच नहीं है. असेसमेंट ऑफ द प्रोसीजरल नॉलेज जनरली कॉल्स फॉर ए परफॉर्मेंस डेमोस्ट्रेशन assessed using a rubric. Whether demonstration of the procedure is not appropriate, a test can be an effective assessment tool. The first stage of developing a test is planning the test content. जो पहली स्टेज है किसी भी टेस्ट को बनाने के लिए वो क्या है, प्लानिंग द टेस्ट कंटेंट. टेस्ट कंटेंट को प्लान करना एंड टेस्ट की लेंथ और उसका कंटेंट जो है उसकी प्लानिंग करना, उसके लिए मनसूबाबंदी करना. Planning the test begins with development of a blueprint or test specifications for the test, structured on the learning outcomes or instructional objectives to be assessed by the test instrument. For each learning outcome, a weight should be assigned based on the relative importance of that outcome in the test. The weight will be used to determine the number of items related to each of the learning outcomes. Test specifications. When an engineer prepares a design to construct a building and choose the material he intends to use in construction, he usually now वो जानता है what a building is going to be used for, कि building जो इमारत है वो किस मकसद के लिए यूज़ होगी, and therefore designs it to meet the requirements of its planned inhabitants. तो इसमें रहने वाले inhabitants के मुताबिक, ज़रूरियात के मुताबिक वो उस बिल्डिंग को, उस इमारत को डिज़ाइन करता है. Similarly in testing, table of specification is the blueprint of the assessment, which specifies percentages and weightage of test items and measuring construct. It includes constructs and concepts to be measured, tentative weightage of each construct, specify number of items for each concept, and description of item types to be constructed. It is not surprising that specifications are also referred to as blueprints, for they are literally architectural drawing for test construction. Fletcher and Division 2009 divided test specification into the following 4 elements. Number 1 is atom specification, number 2 presentation model, number 3 assembly model, number 4 delivery model. Atom specification describe the atoms. Atom specification atom को describe करते हैं, बयान करते हैं prompts or task या किसी भी task को या prompts को and any other materials such as text, diagrams and charts which are used as stimuli. Typically, a specification at this sub-level contains 2 key elements, sample of states to be produced and guiding language that details all information necessary to produce the task.
Presentation model. Presentation model provides information how the items and tasks are presented to the test takers. Assembly model. Assembly model helps the test developer to combine test items and takes the and task to develop a test format. Delivery model. Delivery model tells how the actual test is delivered. It includes information regarding test administration, test security, confidentiality, and